नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस लाइव शो में आपका इस्तकबाल करता हूं और हमारी कोशिश लगातार जारी है जिसमें हम शुरुआती रुझानों के हिसाब से यानी कि सवेरे कई सारी खबरों के हिसाब से एक खबर को आपको अच्छे से एलोबरेट करते हैं, आपको समझाते हैं, उसके तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। उपराष्ट्रपति हैं देश के जगदीप धनखड़ और जिस तरीके से वो उपराष्ट्रपति बने तब भी काफ़ी शोर मचा था, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोट किया गया किसान पुत्र हैं तब काफ़ी चर्चा हुई थी। और जगदीप धनखड़ आज ही चर्चा में नहीं है, दरअसल जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के तब से वो चर्चा में हैं। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी या वर्तमान में भी है, उस समय से लगातार आरोप लगाती रही थी कि जगदीप धनखड़ उनके काम में दखलंदाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, कानूनी जानकार हैं। दरअसल वो शुरुआती अपने स्पेस से वकील रहे और कानूनी जानकार बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। तो अब देश के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति बने देश के। उपराष्ट्रपति पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी, एक एडिशनल जिम्मेवारी होती है हमारे यहाँ, वो होती है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि स्पीकर होता है। वही राज्यसभा को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं आगे। जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में बोला है कि राहुल गांधी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये माइक ऑफ करने वाली बात को बोलना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बोल जाए कि संसद में माइक ऑफ कर दिया जाता है, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है। उन्होंने अपना भी जिक्र किया और इसके बाद बताया कि ये बात बिल्कुल एक तरह से एक समझ लीजिए कि अपुष्ट है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दमदारी नहीं है। दरअसल जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं, वो कहते हैं कि संसद में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमारी बात को रखने नहीं दिया जाता है। और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेताओं का ये माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं और कई मंचों से कह चुके हैं। इवन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में इसको कई बार कहा, इसके अलावा संसद में भी कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने जो अभी वो लंदन गए हुए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, चैथम हाउस, तमाम अलग अलग मंचों में पहुंचे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। मोदी से राहुल की लड़ाई में जगदीप धनखड़ की एंट्री हो गई है। जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि माइक ऑफ वाले बयान पर धनखड़ ने राहुल को खरी खरी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा विदेश में सांसद का ये कहना देश का अपमान है, देश के लिए अपमान वाली बात है कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। देखिए, उनकी जो एंट्री हुई है जगदीप धनखड़ की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है वो माइक वाले मामले को लेकर हुई है। और माइक वाला मामला वो भी संसद को लेकर। माइक ऑफ वाले बयान पर धनखड़ ने राहुल को सुनाया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें वो जो भारत जोड़ो यात्रा में रही, वो तस्वीरें जो उनकी चैथम हाउस में रही, वो तस्वीरें जो उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो तस्वीरें जो संसद में रही, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, दो चीजें हैं, माइक ऑफ करने वाले जो मायने हैं वो दूसरे हैं कि माइक ऑफ करने के मायने का मतलब हुआ कि साहब हमारी बात नहीं रखने दी जाती, हमें अपनी बात नहीं कहने दी जाती, हम जो बात उठाते हैं उसको नहीं कहने दिया जाता है। एक तो शॉर्ट में पहले सुनिए कि उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की रैलीज हो रही थी उसमें अपनी बात को कहा था कि किस तरीके से माइक ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि जनता की आवाज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसको सुनिए जरा। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने। तो सुना आपने किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में कई मंचों से उन्होंने कहा कि जब हम कोई बात करते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। जीएसटी की बात करो तो माइक ऑफ है, नोटबंदी की बात करो तो माइक ऑफ है, बेरोजगारों की बात करो तो माइक ऑफ है।
ये यहां पर तो हमारे पास कंट्रोल है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में तो हमारे पास कंट्रोल है, हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इसको बंद कर दिया जाता है, इसको ऑफ कर दिया जाता है। इसके दो मायने हैं, एक तो इस तरह का कोई प्रयास किया जा रहा है, या फिर इसका मायना यह है कि हमारी बात को आगे रखने नहीं दिया जाता है। अब इस पर जगदीप धनखड़ ने बात कही है, केवल इस पर ही नहीं, दरअसल राहुल गांधी की वो बात को भी आपको सुनाता हूं कि जो उन्होंने इस समय इंग्लैंड में कही। इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि बात को आगे नहीं रखने दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, तो ये कितना सही है। इस पर अब जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि इस बात को कह दिया। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। जगदीप धनखड़ इस देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, और उन्होंने जब ये इस बात को कहा है तो समझिए कि इस बात के मायने अब दूर तलक जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बयान आया। जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अंपायर होता है, जो सभापति होता है वो अंपायर होता है राज्यसभा का, ना कि चीयर लीडर। ये बात भी बड़ी कह दी है, ये बात जयराम रमेश ने बड़ी कह दी है कि उन्होंने कहा है कि सभापति जो है वो अंपायर है, उसका काम है सबको साथ लेकर चलना, सही डिसीजन देना, ना कि चीयरिंग करना। चीयर लीडर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ये बात यहां से बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस मोदी की लड़ाई में ये संवैधानिक पद से आते हैं। सीधी सीधी बात है कि उपराष्ट्रपति हैं इस देश के, स्पीकर है राज्यसभा के, यानी कि उच्च सदन के। हम जानते हैं कि लोकसभा जो है निम्न सदन है, यानी कि छोटा सदन है, और राज्यसभा चूंकि नॉमिनेट होकर आते हैं यहां पर सांसद, तो उसको उच्च सदन कहा जाता है, और उसमें भी सभापति जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मैंने कहा ना, अतिरिक्त जिम्मेवारी होती है, और बहुत जरूरी जिम्मेवारी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। और ऐसे में कई जो है नाम अगर हम फहरिस्त में देखेंगे तो बड़े नाम हमें नजर आते हैं। हामिद अंसारी जो है उपराष्ट्रपति थे, तो उसके उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी कि वो क्या सरकार के विरोधी रहते थे या सरकार विरोधी, कई बार उन्होंने बात कही। ये सब बातें जो हैं मोदी सरकार के दरमियान आई हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से राहुल गांधी को कहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, और जो लोग विदेश में जाकर ऐसी बातें बोलते हैं वो देश का अपमान है। पहले सुन लीजिए कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने जो बोला है उस पर कांग्रेस कह रही है कि ये बातें वो कई मंचों से कई बार कई जगह कह चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. बातें सुनाई। एक बात मैंने आपको सुनाई कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि माइक ऑफ कर दिया जाता है। एक बात उन्होंने लंदन में जाकर कही है, और लंदन में 2 दफा इस तरह की बात को कहा है कि बात को आके रखने नहीं दिया जाता है। एक बार और उसको सुना दीजिए, जिससे ये क्लैरिटी हो कि जब हम जगदीप धनखड़ की बात को सुनाएं तो वो किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि विदेश में जाकर इस तरह की बातें करना देश का अपमान है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनको बेनकाब करना चाहिए, और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये सब बोल दिया। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory,
when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. तो आपने सुना कि किस तरीके से लंदन में जाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बातें हैं वो आगे नहीं आने दी जा रही हैं। यानी कि ये बात जो है वो कई बार कई मंचों से कह रहे हैं, लेकिन इसके मायने दो तरफा हैं। मैं हमारे साथी रिपोर्टर जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब जगदीप धनखड़ की बात को सुनिए। जगदीप धनखड़ ने जो कहा है उसको सुनना समझना जरूरी है। संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति इस देश के, सभापति हैं राज्यसभा के, और ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि उनका काम अंपायरिंग का है, यानी कि सबको साथ लेकर चलने का, ना कि चीयर लीडिंग का। ये जो बात उन्होंने कही है ये चीयर लीडिंग लगती है। We are the most functional democracy on the planet as on date. Bharat in Amritkaal is setting global discourse on many issues. All Indians are related that the country is on the rise as never before, and its upward growth trajectory is unstoppable. We are certainly on our way to 2047. Young minds who are before us, some of us may not be around at that time, but the warriors of 2047 who are in their 20s and 30s must not get despair from us. They must get positive directional approach from us. How ironical, how painful, how excruciating pain people like him can feel. The world is applauding our historic accomplishments and functional, vibrant democracy. Some amongst us, including parliamentarians, in overdrive, are engaged in thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. How do we justify such wanton orchestration of factually untenable narrative and mark the timing, this unwholesome misadventure? India is having a moment of glory, being president of G20, and there are people outside from the country working in overdrive to denigrate us. Such misplaced campaign mode to taint and tarnish our parliament and constitutional entities is too serious and exceptional to be ignored and countenanced. Friends, no political strategy or partisan stance can justify compromising our nationalism and democratic values. I am before a noble soul. My silence on this misadventure, if I observe silence on this orchestration by a member parliament outside the country, which is ill-premised, unwholesome, motivated, I would be on the wrong side of Constitution. It will be constitutional culpability and outrage of my oath. How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off? How dare anyone pick up courage to say so? Has there been ever illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency. The darkest period which any democracy can suffer. The Indian democratic polity has now matured. There can be no repeat of that. Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian Parliament mics are put off, is an affront to the nation. Imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes.
such kind of wanton misadventure to run down our democratic fabric and values cannot be countenanced. I call upon everyone, intelligentsia, media and youth who are warriors of 2047, rise to the occasion, expose these forces, neutralize them. I am not a stakeholder in politics. I don't engage in partisan stance, but I do believe in constitutional duty, and I know fear cannot dominate my mind after I have kept Dr. Singh on my right side for so long. If I observe silence, the vast majority of people who believe in this nation would be silenced forever. We cannot allow such kind of narrative to gain currency and momentum by those elements who wish to antidote our rising growth. Tell me, friends, what can be more distance from truth than this? I preside Rajya Sabha. Let someone come forward and say, mic was put off. There is the fullest freedom of expression as per Constitution. And no democracy in the world can rival that. Blossoming democracy at all layers. Which country can claim to have multi-layered democracy at panchayat level, municipal level, state level, and central level? And different, diversified. You run down our judiciary on a foreign soil. Where on the planet your judiciary that acts with lightning speed? Not one number of instances. There may be issues which we have to iron out. But our judiciary is manned with the most brilliant minds in the world. We have achieved justice with that kind of exposure. In democracy, there will always be issues in doctrine of separation of powers to be settled, resolved. But we, who are at the apex level of these institutions, cannot be complainants. We cannot hold out agreements. We have to find resolution. तो एक शब्द आपने सुना होगा कि हाउ डेयर, मतलब कि हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, ये बात उन्होंने कही। और कैसे बोल सकते हैं, इतना भी कहा कि उन्होंने कहा कि कैसे बोल सकते हैं, हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन हाँ सीधे बात यही है कि जब लंदन में विदेश की बात हो रही है, तमाम वो बातें जिसका जिक्र सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ रहा है, तो अब ये जो एंट्री हुई है जगदीप धनखड़ की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़, और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माइक ऑफ वाली जो बात कह रहे हैं उसको बेनकाब करना चाहिए। इस बात को ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए बात ये है कि माइक ऑफ वाली बात को जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया है वो आज से ही नहीं, बीते 3-4 महीने से लगातार वायरल है। वायरल का मतलब इस सेंस में समझा जाता है कि जिस बात पर जिक्र जो है लगातार हो रहा है, जिस बात पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि माइक ऑफ का मतलब हुआ कि अगर कोई बात कही जा रही है, कोई बात बताई जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को कोई दिक्कत परेशानी है, इसलिए उस बात को लेकर वो एक तरह से असहज महसूस करती है। इसका एक एग्जाम्पल और हो गया, बड़ा एग्जाम्पल ये सामने आ गया कि जब राहुल गांधी ने स्पीच दी तो ये कहा जा रहा है कि उस 50 मिनट में से 36 मिनट जो हैं वो फैक्चुअल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी या कांग्रेस सीधे सीधे आ गई कि देखो फिर से आप देख लो माइक ऑफ। माइक ऑफ का मतलब हुआ कि बात को जो कहा जा रहा है उसको रिकॉर्ड में नहीं रखने दिया जा रहा है। दूसरा कि बात के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। जब आप संसद की कार्यवाही को देखते हैं तो स्पीकर के पास ये अधिकार होते हैं कि वो किसको अपने अपने हिसाब से टाइम दे, हालांकि वो सब शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी स्पीकर के पास ये विशेषाधिकार है कि वो अपने हिसाब से, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, अपने हिसाब से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बोलने के लिए वक्त दे। और इसलिए आपने देखा है कि जब भी जवाब देने वाले की बात होती है कि सवाल किया जाता है, उसके बाद जब जवाब दिया जाता है तो चाहे मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, जब भी वो किसी बात को लेकर बोलते हैं
तो टोका टाकी बहुत कम होती है। और ये ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है या अभी हो रहा है या 9 साल में हो रहा है, ये पहले से चला आ रहा है, ये चलन है। लेकिन इस चलन में किस तरह से तब्दीली देखी जा रही है वो अलग बात है। कई बार हम देखते थे कि सोमनाथ चटर्जी को आप देखते थे लोकसभा के स्पीकर रहे और मीरा कुमार लोकसभा के स्पीकर रही, तो वो अपनी पार्टी यानी कि यहाँ जहां से आती थी, खैर जब वो स्पीकर बन जाता है तो पार्टी तो रहती नहीं है, वो तो एक संवैधानिक पद है, तो वो फिर जहां से आया है मतलब जहां से ओरिएंटेशन हुआ है उन लोगों को भी वो टोकता है, डांटता है, डपटता है। सोमनाथ चटर्जी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। एक दफा मेरे को ध्यान है कि उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अगली बार, और उसमें शायद मुलायम सिंह यादव या और तमाम नेता भी थे, कि आप लोग कभी आगे चुनकर ही ना आए, ये तक कहा था। फिर बाद में उन्होंने अपनी बात को पीछे लिया था कि मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह की बात कह दी गई, लेकिन क्योंकि हल्ला बहुत हो रहा था इसलिए कह दिया। सोमनाथ चटर्जी को हम जानते हैं, मीरा कुमार एक शांत बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं कि लोकसभा में बड़े शांति से, लेकिन वो बहुत अच्छे से चलाती थी। हामिद अंसारी बहुत डांट डपट देते थे। ये सब वो बातें हैं जब जो बात कांग्रेस कह रही है कि अंपायरिंग के लिए है साहब, आप लोग इस बात के लिए कि सबको साथ लेकर चलें, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही आपका झुकाव हो जाए। ऐसे में चीयर लीडिंग की जो शब्द है जो जयराम रमेश कह रहे हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की इस बात को सुने पहले आप, कि वो जब ये कहते हैं, जब वो इस बात को कहते हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है और उसमें वो तमाम मुद्दे गिनाते हैं, 1 मिनट में वो तमाम मुद्दे गिना देते हैं कि नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, कोई भी बात हो, माइक ऑफ। यहां तो कंट्रोल हमारे पास है, यानी कि जब वो भारत जोड़ो में बात कर रहे थे, लेकिन संसद में कंट्रोल हमारे पास नहीं है। संसद में सरकार के पास कंट्रोल है। सरकार कंट्रोल कर रही है कि हम किस बात को बोलें, किस बात को ना बोलें। कोई जरूरी बात है तो उसको उठाएं, लेकिन वो रिकॉर्ड में ना जाए। कहानी यहां तक नहीं है कि माइक ऑफ यानी कि बोलने को रोक दिया जा रहा है। कहानी यह है कि क्या बोलने को रोक दिया जा रहा है, क्या बोलने से रोका जा रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जिससे जो बात एम्पलीफाई होकर लोगों तक जा सकती है। संसद में बोली गई बात जो है लगातार लोगों के जहन में रहती है, लोग सुनते हैं। और हमें अभी भी ध्यान है कि मतलब आज से 30 बरस पुराने, 40 बरस पुराने या 20 साल पुराने जो भाषण हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, वो आज भी सुने जाते हैं। चाहे वो अटल जी का भाषण हो, चाहे आडवाणी जी का भाषण हो, चाहे कांग्रेस के तमाम नेताओं का भाषण हो, वो सुने जाते हैं क्योंकि लोग उस बात को बहुत तरीके से समझते हैं। जब भी बात कही जाती है सड़क से संसद तक, तो सड़क की बात को संसद में उठाना, कहानी ये है। अभी आम चुनाव होंगे तो बात यही है कि सड़क यानी कि आपकी बात को, आम जनमानस की बात को संसद, देश की सबसे बड़ी जो बैठक है, पंचायत है, वहां पर बात को उठाया जाएगा तो फैसला होगा। उस पर किसी भी तरीके से आम सहमति से लोकतंत्र के हिसाब से फैसला होगा, कानून बनेगा, जो भी हो सकता है। किसी समस्या के निवारण के लिए जो भी हो सकता है वो संसद से बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता है उस बात को लेकर। ऐसे में जब बड़ी बातें जो देश में कानून बने उनको लेकर सवाल जब उठाए जाए और वो सवाल आगे ना बढ़े, तो विपक्ष का जो मामला है वो और गहरा जाता है। जो वो कहते हैं कि हमारी बात को, यानी कि आपकी बात को, हमारी मतलब विपक्ष का इस समय मतलब हो जाता है आम जनमानस। वो लगातार जोड़ते हैं कि आपकी बात, हमारी बात को जब उठाया ही नहीं जाएगा या बोलने नहीं दिया जाएगा तो उस पर बात कैसे होगी, उस पर सहमति असहमति कैसे बनेगी। ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए करीब करीब 1.25 महीना हो चुका है और ज्यादा ही माने, क्योंकि 30 जनवरी को यात्रा पूरी हुई और उसके बाद से फरवरी और मार्च का आज 10 तारीख है। तो इतने दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का जो खुमार है वो कांग्रेस पार्टी पर तो है ही है, और उसकी जो बिछाई गई बिसात है, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है या उसके बाद जो है संसद में हंगामा है, उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन है, या फिर आगे एक यात्रा करने की बात है, वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस को जो ये अभियान जो पिछले 9 सालों में सबसे सफल दिखा है उसको लगातार बढ़ाना है, उस पर लगातार बातचीत करनी है। ऐसे में सामने से ही बात कर दी जा रही है, यानी कि कोई ना कोई अगर टोका टाकी कर दी जा रही है तो कांग्रेस को तो और मौका है। और ये अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को अगर विपक्ष में बनना है तो उसको बातों में लगातार बने रहना होगा, राजनीतिक विश्लेषण में बना रहना पड़ेगा, जिस पर चर्चा होनी पड़ेगी। ये सब वो बातें हैं जिसको लेकर देखा जा रहा है। लंदन में जो बातें राहुल गांधी ने कही है उसमें माना जा रहा है कि वो लंदन के लिए कम, वहां जो लोग थे उनके लिए कम, लेकिन भारत के लोगों के लिए, भारत के आम जनमानस के लिए ज्यादा कही है। चाहे उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला, चाहे उन्होंने चैथम हाउस में बोला, चाहे वो IGA में बोल रहे थे, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन में बोल रहे थे, वो सब बातें जो अब बड़ी होकर निकल कर आ रही हैं, वो सब बातें ऐसी हैं जिसमें
भारत को देखकर ही बात कही गई। और ये देखिए, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बात आपको सुननी चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा में आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने बोला, और उसके बाद जो है उन्होंने लंदन में बोला, और अब ये कहानी जो है अभी भी बनी हुई है। कई बार ये जिक्र जो है जेपी नड्डा कर देते हैं कि दाढ़ी कटवा ली, ये लोग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, ये सब पुराना हो गया। लेकिन बात ये कि आप चर्चा कर रहे हैं तो मार्केटिंग जो है वो अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है। ये बदलाव जो है राहुल गांधी या कांग्रेस में, अगर आप 1 साल में देख रहे हैं, 6 महीने में देख रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जाएगा। पार्टी की जीत, किसी प्रदेश में सरकार बनाना या कहीं पर बेहतर पोजीशन कर लेना वो अलग बात है। पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी की जो स्थिति हो गई थी उसमें ये जीत बढ़ी है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी, और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने that's not even up for discussion. That's a distraction, and I don't want to get into it. Okay. Naresh, The central idea of the opposition is to get together and do everything that is required to defeat the RSS and the BJP. Well, the point I was making about the BBC was that anybody who supports the Prime Minister blindly is supported, and anybody who raises questions on the Prime Minister, on the government, is attacked. And that's what happened with the BBC. On the idea, you saying, has silence helped you think about solving these 3 problems? That's not how these problems are solved, right? In large systems, in large countries, problems are solved by working with people. And this idea that one person solves all these problems is not, let's say, it's not very profound. It's superficial. These problems require conversations, and they require conversations with stakeholders. If you're talking about small and medium businesses, they require large-scale conversations. They require responsive government, a government that listens. So that I don't agree with your idea that there is this top-down, one-man, Narendra Modi style thing, that he's got a magic wand and he runs around and fixes things. And you can see that the results of that type of an exercise. कि किस तरीके से राहुल गांधी आपने आपको 2 मंच सुनाए। एक तो भारत जोड़ो यात्रा से सुनाया कि भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार माइक ऑफ की बात करते रहे, और इसके अलावा हमने आपको सुनाया कि कैसे वो इंग्लैंड में जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसमें तमाम उन बातों का जिक्र हुआ जो भारत से कोरिलेटेड है। देखिए, यहां पर उन्होंने बीजेपी आरएसएस का भी जिक्र किया, यहां पर उन्होंने जिक्र किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का क्या योगदान है, यहां पर उन्होंने उस अम्ब्रेला का भी जिक्र किया जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है कि साहब 2024 के इलेक्शन के लिए कांग्रेस के अम्ब्रेला के तले तमाम दल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। उन्होंने कहा गेट टुगेदर, इंटरेक्शन, यही हमारी जो है फॉर्मूला है। अब आप यहां से समझ लीजिए कि राहुल गांधी जिस धुरी पर चल रहे हैं, जिस धुरी पर कांग्रेस को घुमा रहे हैं, और कई लोगों को इस बात को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि ये जो कांग्रेस है ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जो उदयपुर में 12 से 13, 15, 14 मई को डिसाइड हुई। वो कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के हिस्से वाली कांग्रेस है जो बीते मई में 1 साल होने जा रहा है। और आप देखिए कांग्रेस किस तरीके से, किस कदर बदली है, और उसमें वो सब कुछ है जिसमें चर्चा जो है लगातार है। हमने देखा कि मई 2022
22 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, नव संकल्प शिविर रखा गया जो आगे के लिए डिसाइड करता है कि कांग्रेस को क्या करना है। कांग्रेस ने कहा कि हमें ट्रांजिशन फेज चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें नए लोगों को साथ लेकर आना है। पुराने लोग जो हंगामा कर रहे हैं, जिनको कुछ गमियां खामियां लगती हैं, वो नमस्ते कर लें, चले जाएं। जाने लगे। कपिल सिब्बल गए, गुलाम नबी आज़ाद गए, लिख कर गए साहब बहुत कमियां हैं, तमाम बेरुखी जो है उन्होंने जाहिर करी, फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा उसमें गांधीयंस नहीं होंगे, नहीं रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, एक संदेश चला गया। इसके बाद वो CWC की मीटिंग में भी नहीं गए कि साहब क्या कहते हैं, आपका फैसला जो है आपको मुबारक, खड़गे जो कहेंगे वो हम करेंगे। वो सब हो रहा है। इसके साथ साथ एक अभियान जो है उन्होंने चला दिया कि चाहे वो मानसून सेशन में हमने देखा कि महंगाई को रोकने वाली बात पर हंगामा रहा, उसमें भी लगातार मानसून सेशन उनके हिस्से गया, यानी कि गतिरोध रहा, जिससे कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जो करीब 5 महीने का स्पेस ले जाती है। फरवरी में पूरा का पूरा जो टाइम है वो अडानी से लेकर तमाम ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिस पर वो संसद में अपनी बात को रख लेते हैं। इसके बाद अगर कांग्रेस की तरफ कांग्रेस अधिवेशन करती है तो उसमें भी तमाम ऐसी बातें बोली जाती है जिसको लेकर चर्चा बनी रहती है। इसके बाद राहुल गांधी जो है लंदन, मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, एक साल में जो करीब 10 महीने की टाइमलाइन मैंने आपको गिना दी है। ये 10 महीने जो हैं 2-4 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी अगर वो लंदन गए हैं तो चर्चा इसी बात की बनी हुई है कि वो जो देश के मुद्दे हैं, देश के इश्यूज हैं या विचारधारा की बात है। राहुल गांधी को लेकर कहा जाता है कि विचारधारा को लेकर काफी ज्यादा रिजिड रहते हैं या अड़ियल बिहेवियर है कि उनको लगता है कि जो विचारधारा है उस पर बात की जानी चाहिए। अगर विचारधारा चेंज हो जाएगी व्यक्ति की तो वो जो वोट है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने आप आ जाएगा चुनकर, वो वोट पड़ जाएगा। अगर विचारधारा लोगों के बीच में बदल जाएगी, जो स्पेस बना हुआ है, एक तरह का उनका एक एग्जाम्पल ये भी होगा, शायद वो मिसाल के तौर पर, नज़ीर के तौर पर ये भी कहे कि देखिए मेरी जो इमेज बनी थी करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसको वो लगातार बोलते हैं कि बीजेपी ने जो मेरी इमेज गढ़ी हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर वो सब टूट गई, क्योंकि सत्य सामने आ रहा है, लोगों के बीच में मैं हूँ। 3600 किलोमीटर चल लिया, लोगों को पता चल गया कि ये नेता जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाला नहीं है या फिर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, हर समय आपके बीच में है, जरूरत के वक्त आपके बीच में है। ये वो बातें हैं जो कांग्रेस ने अपने बदलाव के साथ प्रमुखता से रखी और बदलाव के साथ सेट की। आज ये बदलाव जो है वो सामने नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से सामने से जो बात आती है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई तब भी सामने से यानी कि बीजेपी की तरफ से कई बातें आई, टी शर्ट पर बातें आई या उनके अटायर पर बात हुई या दाढ़ी पर बात हुई, तमाम वो बातें जो इररेलिवेंटिक थी। देखिए कोई भी बात है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे को खाना खाना है और आप सड़क की बात करेंगे तो वो रेलिवेंटिक नहीं होगी, प्रासंगिक नहीं होगी। इसलिए रेलिवेंटिक बातें जो है वो राजनीति में लंबी चलती हैं। रेलिवेंटिक बातें क्या है कि आप लोगों की बेरोजगारी की, महंगाई की बात को उठा रहे हैं तो वो हमेशा है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल 9 साल में। मैं हमेशा जिक्र करूंगा कि बेरोजगारी, महंगाई पर तो 2014 में सरकार गिर गई, कांग्रेस की चली भी गई, और भी इश्यूज थे, करप्शन भी इशू था, और वो एक तरह से 10-12 साल बाद एक सत्ता विरोधी लहर आती है, उसमें क्रिएट हो ही जाता है। ये हमने देखा ही है, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो चाहे वो देश की सरकार हो, क्योंकि इस तरीके का आदर्शवाद वाला जो नियम है वो किसी भी सरकार के साथ जाता नहीं है। खैर, इसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने अब अपनी बात को इस तरीके से कहना शुरू किया है कि जहां दम वहां हम, यानी कि जहां हमारा दमदारी दिख रही है वहां हम पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में उनको लगा कि यहाँ स्पेस है, घेरा जा सकता है, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जहां पर मोदी सरकार जो है पीछे नजर आएगी, हमारी बातें आगे नजर आएंगी। चाहे उसमें वो ओपीएस है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी वहां बहुत है हिमाचल प्रदेश में, ओपीएस है, ओआरओपी है, अग्निपथ स्कीम है, तीनों बातों को ज्यादा से ज्यादा कहा गया चुनावों में, चुनाव जीत गए। अब कर्नाटक में 40% जो कमीशन खोरी वाली बात है, वहां पर कांग्रेस जो है अग्रणी पोजीशन में दिख रही है कि कांग्रेस जो है चुनाव ना जीत जाए, वहां पर दम लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का भी दम वहां लगाया गया, खूब दमदारी से लगाया गया। इसके साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों पर अभी से ध्यान दिया जा रहा है कि अगर उसको जीत जाए तो आम चुनावों में एक ऐसी पोजीशन बनेगी जहां हम लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 राज्यों के चुनाव हार जाएं उसके बाद आप कहो कि आम चुनावों में हम बेहतर प्रदर्शन कर देंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है।
ये उन्हीं पार्टियों में संभव है जैसा बीजेपी करती है कि वो दोनों चुनावों को बिल्कुल सेग्रीगेट करके अलग तरीके से तैयारी कर रही है। आप ये यकीन से मानिए कि बीजेपी जो राजस्थान में विधानसभा की तैयारी कर रही है और जो लोकसभा की तैयारी कर रही है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। उनका काम करने का तरीका ही अलग है बिल्कुल, क्योंकि उनके पास संगठन बड़ा है, आरएसएस मौजूद है और आरएसएस पर लगातार जो है वो राहुल गांधी प्रहार करते हैं। इसको लेकर जब बातें आती हैं तो बातें बड़ी हो जाती हैं। आज जो बात है वो बड़ी है, उसमें जयराम रमेश जब ये कह देते हैं कि जगदीप धनखड़ अंपायर हैं, चीयर लीडर नहीं। देखिए ये शब्द बड़ा है, इसको समझना जरूरी है। चीयर लीडर जो हमने अपने दौर में देखा है, तो आज से 12-13 या 15 साल पहले ले जाऊं, 2008 या 9 में आईपीएल शुरू हुआ, तब से ये शब्द जो है हमारे जहन में या आसपास दिखने लगा। दरअसल जो मैच होते 2020 मैचेस आईपीएल के दौरान, उसमें जब चौके छक्के लगते तो उसको चीयर किया जाता और कुछ महिलाएं जो हैं उसको चीयर करती, यानी कि डांस करती। ये चीयर लीडिंग मतलब उसको मनोरंजन जो है क्रिएट करना है, और वो एक तरफा मनोरंजन होता है ना, कि अगर दोनों टीमों की अलग अलग चीयर लीडर्स होती हैं तो उसमें अगर विकेट गिरता है तो वो दूसरी टीम के लिए चीयर लीडिंग होती है, अगर चौके छक्के लगते हैं तो वो दूसरी टीम की चीयर लीडर्स होती हैं। तो ये बात वो एक तरफ झुकाव के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन हेड हैं जयराम रमेश, उनका कहना ये है कि ये चीयर लीडिंग वाली पोजीशन क्यों आ रही है उपराष्ट्रपति की, सभापति हैं राज्यसभा के, उनका काम है अंपायरिंग करना, यानी कि बराबरी से सबको तोल मोल कर करना। ये चीयर लीडर यानी कि एक तरफा झुकाव, ये एक तरफा काम करने वाला जो काम किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज जयराम रमेश ने कही है, और ये सुनिए ये बात और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, और इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने पहले भी बोला है कि ये जो माइक ऑफ है ये सिर्फ यहां नहीं, मतलब कि केवल इन पोजीशंस में नहीं है कि जहां हम बोलना चाहते हैं, ऐसी जगह पर भी है जहां पर हम काम करना चाहते हैं। माइक ऑफ वो भी है जहां पर काम करना चाहते हैं और किसी भी वजह से रोका जा रहा है उसे, ये बात भी है। इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है तो वहां पर भेदभाव वाली स्थिति हो, वो समझ में भी आता है, वो भी बात कही जाती है। राहुल गांधी ने इस पूरी बात को, यानी कि ये कहानी पूरी जो बताई माइक ऑफ, उसके बाद से जो बात चली वो लंबी चली है। तो आपको पूरी बात सुनाते हैं कि आखिर जो उन्होंने जो कहा कि ये जो माइक ऑफ किया जाता है, यानी कि जनता की आवाज को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी की फुल जो बात है वो हम आपको सुनाते हैं इसमें, कि वो किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि जब जनता की बात को पूरा नहीं कहने दिया जाएगा तो फिर बात कैसे चलेगी। You be the next Prime Minister candidate. That's not even up for discussion. That's a distraction, and I don't want to get into it. Okay. Naresh? The central idea of the opposition is to get together and do everything that is required to defeat the RSS and the BJP. Well, the point I was making about the BBC was that anybody who supports the Prime Minister blindly is supported, and anybody who raises questions on the Prime Minister, on the government, is attacked. And that's what happened with the BBC. On the idea, you saying, has silence helped you think about solving these three problems? That's not how these problems are solved, right? In large systems, in large countries, problems are solved by working with people, and this idea that one person solves all these problems is not, let's say, it's not very profound. It's superficial. These problems require conversations, and they require conversations with stakeholders. If you're talking about small and medium businesses, they require large-scale conversations. They require responsive government, a government that listens. So that I don't agree with your idea that there is this top-down, one-man, Narendra Modi style thing, that he's got a magic wand and he runs around and fixes things. And you can see that the results of that type of an exercise.
तो ये हमने सुना कि जब उन्होंने लंदन में इस बात का जिक्र किया, इसके साथ साथ भारत जोड़ो का जिक्र जब हम करते हैं तो उसमें उन्होंने माइक ऑफ वाली बात कही थी, वो भी मैंने आपको सुनाया। और ये जब लंदन में जिक्र किया था तो उसके बाद उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने भी इसका जवाब दिया था कि ये जो बात है वो ठीक नहीं है। दरअसल 2 रोज पहले ही इसका जिक्र जो है राहुल गांधी ने लंदन में किया माइक ऑफ वाली बात का। जो भारत जोड़ो में जिक्र किया वो तो 3-4 महीने पहले जिक्र किया है ना, और जो अभी जिक्र किया लंदन में वो 2 रोज पहले, यानी कि जो उनकी यात्रा चल रही है जिसमें वो कैम्ब्रिज में एज ए फेलो गए, वहां पर प्रेजेंटेशन दी। इसके अलावा वो चैथम हाउस गए, IGA में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ माहौल रहा। इसके अलावा अलग अलग मंचों में जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, गेट टुगेदर जैसे कह सकते हैं। और अब जब वो लंदन में इस बात को बोलते हैं तो हरिवंश नारायण जी का 2 रोज पहले ही एक बात आई थी कि ये जो बात है वो ऑथेंटिक नहीं है। कि विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का ऑडियो जो है जब वो संसद में बोलते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, कहाँ तक सच है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। तो ये आपने सुना हरिवंश नारायण सिंह को, उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस तरीके की बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर और भी है कि जो कांग्रेस के सांसद हैं और पार्टी के जो अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, दरअसल उनके खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस था उसकी सुनवाई के लिए लोकसभा की जो कमेटी होती है, इसको प्रिविलेज कमेटी कहते हैं, प्रिविलेज कमेटी इस पर सुनवाई करती है। उसने निशिकांत दुबे जो भाजपा सांसद हैं, गोड्डा एक जगह है झारखंड में, वहाँ से सांसद हैं, उनको बुलाया है। ये पहले 14 मार्च को बुलाना था, अब 10 मार्च यानी कि आज की तारीख को बुला लिया है। करीब 1:30 बजे उनको बुलाया जाएगा और इस पर बात की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही इस पर समिति को लिख कर दिया था, यानी कि उन्होंने लेटर दिया था कि विशेषाधिकार हनन। और हमने देखा है कि जब भी निशिकांत दुबे कई बार उठते हैं लोकसभा में तो बकायदा वो किताब, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क होता है, ऐसी किताब है, चाहे वो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, जिसमें नियम लिखे हुए हैं, कायदे कानून लिखे हुए हैं कि किस तरीके से किस बात को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। भाषण को लेकर राहुल को प्रिविलेज नोटिस मिला था, जिस पर जवाब भी दे दिया था। संसद की विशेषाधिकार जो समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी जो है, उसमें निशिकांत दुबे को पेश होना है। बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे। भाषण को लेकर राहुल गांधी को प्रिविलेज कमेटी का एक नोटिस मिला था, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया था। और ये जो सवाल किया गया था प्रिविलेज कमेटी में, जो ये प्रस्ताव रखा था, वो निशिकांत दुबे ने रखा था, तो अब उनको पेश होना है। देखिए ये जो घटना है वो समझ में आ जाएगी कि जो 10 फरवरी को उन्होंने सेक्रेटरीट को एक इस तरह का अपनी एप्लीकेशन दी, उसके बाद राहुल गांधी को वो नोटिस गया, और वो नोटिस था कि आपने जो अधिकार हैं उनका हनन किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उस पर आपका क्या जवाब है वो जवाब दे दीजिए। और जवाब देने के बाद सीधे तौर पर जिसने ये हनन के आरोप लगाए उस पर भी सवाल किए जाते हैं। तो 14 मार्च को आज से 4 दिन बाद बुलाया जाना था निशिकांत दुबे को, लेकिन आज बुला लिया गया। यानी कि 10 मार्च को ही प्रिविलेज कमेटी ने कहा कि साहब आप आ जाइए और अपनी बात को रखिए कि आप जो ये हनन का आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा कि कानून के हिसाब से ये गलत किया है।
तो आपको वो बताना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें हैं कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो एक तरह अभी उस समय देख रहे थे कि एकदम बहुत आग बबूला हो गए थे निशिकांत दुबे, और हम जनरली देखते हैं कि वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं और एग्रेसिव तरीके से नज़र भी आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी नज़र आते हैं और वैसे भी वो नज़र आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे की जो बात है उसको बड़ा किया जाता है, हमेशा रखा जाता है कि जो कानून वो गिनाते हैं, दो लोग जो हैं वो लोकसभा में बड़े कानून गिनाते हैं। एक तो रविशंकर प्रसाद हैं, वो भी एक बुक लेकर रहते हैं और वो कानून गिनाते रहते हैं, और इसके साथ साथ एक निशिकांत दुबे हैं, वो भी बुक लेकर जो है कानून गिनाते रहते हैं। कायदे कानून यानी कि नियमावली जो रहती है, नियमावली रहती है, उसको वो बताते रहते हैं कि किस तरीके से बात कही जा रही है। एक राहुल गांधी की बात को सुन लेते हैं कि भारत जोड़ो के दौरान उन्होंने जो ये बात कही कि साहब माइक ऑफ कर दिया जाता है, तो माइक ऑफ की बात सुन लीजिए जरा। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने माइक ऑफ वाली बात कही। इसके बाद जो लंदन में बात कही है, इस पर जगदीप धनखड़ का जो रिएक्शन आया है उसको मैं आपको बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई बातें भी बताऊंगा। दरअसल जगदीप धनखड़ जो है, आज उन्होंने ये राहुल गांधी के लिए बोला कि ये सब जो है बातें कही गई हैं वो गलत हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बोल दिया, ये तक बोला उन्होंने, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बोल दिया। इसके साथ साथ अब ये बात भी सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो इस तरह की बातें या इन बातों को खूब तूल देते हैं जो संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति, उनको लेकर वो बड़ी जो स्तर से, अपने संवैधानिक पद के स्तर से कई बार नीचे आकर भी कह देते हैं, वो एक सामान्य तौर पर बातें कह देते हैं, जबकि वो शायद उनको शोभा नहीं देता या उनके हिस्से की बात नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैं सुनाता हूं आपको जगदीप धनखड़ ने जो अभी कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि बोल दिया। हाँ, केवल उतने हिस्से को सुनाते हैं कि आपको कि उन्होंने जो बोला है कि किस तरीके से ये सब जो है कहा गया है, मतलब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक तरह का गुस्सा, एक तरह से समझ सकते हैं कि उबल रहा है या पल रहा है कि वो राहुल गांधी को सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि माइक ऑफ करने वाली बात वो विदेश में जाकर कह रहे हैं, ये देश का अपमान है। पहली बात ये, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं विदेश में। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि उनको बेनकाब करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं एक अब सवाल के घेरे में, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सभापति हैं राज्यसभा के। इसके साथ साथ जो अब कांग्रेस ने आरोप लगा दिया, कांग्रेस ने कहा कि चीयर लीडर जैसे शब्द इस्तेमाल कर लिया है, तो हो सकता है कि अब फिर से उनको कोई नोटिस ना थमा दिया जाए कि आप देश के उपराष्ट्रपति के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द की चीयर लीडर। हालांकि ये जो अब राजनीति में आए तो ये शब्दों का जो है मायाजाल जो है आना ही आना था, क्योंकि अगर आप राजनीति पर बात कर रहे हैं, अगर आप संवैधानिक पद से आकर दूसरी जगह जाकर राजनीति में जा रहे हैं, तो राजनीति में तो शब्दों का मायाजाल इस तरीके का ही है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है कि ये चीजें आई कहां से, ये चीजें सब राजनीति की हैं साहब, ये आपके हिस्से का था नहीं जो आपने ग्रहण कर लिया। ये वो वाली बात भी तो होती है ना कि आप जिन पर कमेंट कर रहे हैं, जिस चीज पर कमेंट कर रहे हैं, उससे कॉन्सिक्वेंसेस बनेगा नहीं ना। अगर आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप एक तरफा होने की जो गुंजाइश है उसको पूरा कर देते हैं, जिसका कांग्रेस फायदा ले सकती है। कांग्रेस कह रही है कि साहब
कि आप क्यों बोल रहे हो, आप चीयर लीडर हो, आप तो अंपायर हो, आप तो मैच को चलाने वाले हो, आप तो मैच को साथ लेकर चलने वाले हो, कि एक तरफ जो है जब बल्ला चलेगा तब आप खूब अच्छे से मौज लोगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो बात है प्रिविलेज कमेटी की, आज जो निशिकांत दुबे से बातचीत है, एक तो वो पहले दिन आ गई यानी कि 14 मार्च से, अब 10 मार्च को होगी यानी कि आज ही हो जाएगी। उसके बाद जो जयराम रमेश ने जो बोला है वो बात कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि जयराम रमेश और सुप्रिया सुलेद की अब से कुछ देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। इसको सुनना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से इस बात पर जवाब देते हैं, इसको सुनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप जगदीप धनखड़ को सुन लें, जो उन्होंने कहा है कि देश को इस तरह से अपमानित करना कितना ठीक है, ऐसे लोगों को बेनकाब करिए। इसके साथ साथ ये जो बात है वो बहुत ख़राब है। इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा ली राहुल गांधी ने, जो विदेश में जाकर ये कहे कि माइक ऑफ कर दिया जाता है। Such misplaced campaign mode to taint and tarnish our parliament and constitutional entities is too serious and exceptional to be ignored and countenanced. Friends, no political strategy or partisan stance can justify compromising our nationalism and democratic values. I am before a noble soul. My silence on this misadventure, if I observe silence on this orchestration by a member parliament outside the country, which is ill-premised, unwholesome, motivated, I would be on the wrong side of Constitution. It will be constitutional culpability and outrage of my oath. How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off? How dare anyone pick up courage to say so? Has there been ever illustration? Yes, we did have a dark chapter of our political history. Proclamation of emergency. The darkest period which any democracy can suffer. The Indian democratic polity has now matured. There can be no repeat of that. Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian Parliament mics are put off, is an affront to the nation. Imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes. Such kind of wanton misadventure to run down our democratic fabric and values cannot be countenanced. I call upon everyone, intelligentsia, media and youth who are warriors of 2047, rise to the occasion, expose these forces, neutralize them. I am not a stakeholder in politics. I don't engage in partisan stance, but I do believe in constitutional duty, and I know fear cannot dominate my mind after I have kept Dr. Singh on my right side for so long. If I observe silence, the vast majority of people who believe in this nation would be silenced forever. We cannot allow such kind of narrative to gain currency and momentum by those elements who wish to antidote our rising growth. Tell me, friends, what can be more distant from truth than this? I preside Rajya Sabha. Let someone come forward and say mic was put off. There is the fullest freedom of expression as per Constitution. And no democracy in the world can rival that. Blossoming democracy at all layers. Which
country can claim to have multi-layered democracy at panchayat level, municipal level, state level, and central level, and different, diversified. You run down our judiciary on a foreign soil. Where on the planet you have judiciary that acts with lightning speed? Not one number of instances. There may be issues which we have to iron out. But our judiciary is manned with the most brilliant minds in the world. We have achieved justice with that kind of exposure. In democracy, there will always be issues in doctrine of separation of powers to be settled, resolved. But we, who are at the apex level of these institutions, cannot be complainants. We cannot hold out a grievance. We have to find resolution. देखिए, जगदीप धनखड़ ने बड़ी कड़ाई से जो है राहुल गांधी के लिए सब बोला है। अब इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा में ये भी बात हो रही है, जगदीप धनखड़ तो पहले भी बड़ी कड़ाई दिखा चुके हैं, चाहे वो राज्यपाल थे बंगाल में, तब भी बड़े कड़क थे ममता बनर्जी के लिए। और इसके साथ साथ जब वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक अतिरिक्त प्रभार जो हमारे देश में होता है, सभापति राज्यसभा का, तब भी जब उनका जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं कड़क नजर आता है। और एक बार तो नजर आया कि वो 10 बार खड़े भी होकर शांत कराने लगे राज्यसभा को। इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जब भी खड़गे ने अपनी बात कही थी राज्यसभा में, तब काफ़ी चर्चा थी इस बात की कि जगदीप धनखड़ जो हैं बोलने से ज़्यादा उनको रोकने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएं। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे हैं इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था, अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए। अब गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए किस तरह कई बार जो गतिरोध जो है नजर आता है एक साथ, और कई बार वो शायराना अंदाज में, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिस तरह से हम जानते हैं एक मशहूर वकील, बड़े राजनीतिज्ञ और कानूनी जानकार जो हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो उनका जो ज्ञान है वो भी काफ़ी अच्छा है, और कई बार शायरी को लेकर भी वो जो उनका अंदाज़े बयां होता है वो भी खास होता है। वो सुन लीजिए ज़रा। माननीय, मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब
यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। गालिब साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी शायराना अंदाज जाग गया, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो है संसद की कार्यवाही, यानी कि चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो शायराना अंदाज में अपनी बात को कहते हैं, और जब स्पीकर भी इस अंदाज में आ जाए तो बड़ा अलग नज़र आता है। वैसे वो कम नज़र आते हैं इस तरह से स्पीकर जो है कि वो शायरी बोलें, तो जगदीप धनखड़ के साथ ये चीज़ जाती है। देखिए, जगदीप धनखड़ पर ममता बनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा फायर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वो उनके खिलाफ अपनी बातें कहती रही हैं, क्योंकि माना ये जाता रहा कि ममता सरकार में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करते रहे वो जगदीप धनखड़ ही करते रहे। ये कह रहा जाता रहा कि जिस तरह से राज्यपाल की एक ड्यूटी थी, वो कहते थे मैं तो अपनी राज्यपाल की ड्यूटी निभा रहा हूं, लेकिन कई बार ये माना जाता था कि वो उससे इतर भी अपनी बात को कह जाते हैं। Ma'am, will you make any fresh appeal for the removal of the governor? You have written 3 letters in the past. Do you? I have already said, and you know why a man, somebody sent me because he was the reporter at that time, the journalist, जो यूपी का केस में जिसको खिलाफ में एफआईआर कर दिया, दे सेंड मी द डिटेल्स। एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था, but they have gone to court, cleared it from the court, but again the PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. What do you want to know more? What do you want to more know? No, but so do you think he will write more letters? He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। मारात्मक अभियोग मैंने हावड़ा जो तरीके से जब वो राज्यपाल थे तब वो ममता बनर्जी उन पर काफ़ी ज़्यादा बोलती थी, कहती थी, और वो ये तक कह देती थी करप्टेड मैन, यानी कि वो करप्शन में भी हैं। लेकिन ये बात चूँकि वो उस समय उनके आपस की जो तल्खियाँ थी वो ज़्यादा थी। खैर, ये तस्वीरों को हटाते हुए मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ इस बात को बढ़ाया जाए कि किस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग मंचों से अपनी बात को कह रहे हैं, और इस बात में ज़्यादा जोर आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब जिस मुहाने पर है, कांग्रेस अब इस मुहाने पर है कि यहां से केवल एग्रेसिव मोड ही ऑन कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, और ये किया भी जा रहा है। जिस तरीके से एग्रेसिव होकर बात कही जा रही है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने इस बात को कह दिया कि राहुल गांधी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, उनको बेनकाब करिए, और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो सामने से कांग्रेस ने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को, उपराष्ट्रपति को, और कहें तो सभापति जो राज्यसभा के हैं उनको ये तक कहा कि वो चीयर लीडर है। अब ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि सीधे सीधे यहां पर राजनीति में खुद कूदे जगदीप धनखड़। तो अब ऐसा तो है नहीं कांग्रेस बख्शेगी, कांग्रेस भी उसी तरह से उनको बेव में लेकर आएगी। लेकिन ये बात जो आ रही है वो राहुल गांधी के आसपास घूम रही है। राहुल गांधी जब से लंदन गए हैं तो काफी चर्चा है, उनके अटायर को लेकर चर्चा जो है तेज हुई, कई बार उनके जवाबों को लेकर चर्चा तेज हुई, कई बार आरएसएस को लेकर चर्चा तेज हुई। तो अब ये चर्चा तेज हो गई कि देश की बात को विदेश में क्यों कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस बात को कई बार कह चुकी है कि बात कोई भी हो कहीं भी बोली जा सकती है। अगर कहीं भी बोलने की बात की आजादी है तो कहीं भी बोला जाएगा। और हमने देखा कि जिस तरीके से राहुल गांधी लंदन के 4 मंचों से अपनी बातें कह चुके हैं, उसमें चैथम हाउस की जो बात है काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है। और
ये बात जो पॉपुलर हुई, जिस पर तमाम जो सवाल थे, चाहे वो आरएसएस को लेकर है, बीजेपी को लेकर है, अपनी बात को बोलने को लेकर है, लोकतंत्र को लेकर है, ये सब वो बातें हैं जो लगातार चर्चा में रहे। I will save plenty of time in the room as well to take your questions later on. But for now, let's just get straight on with the Q&A, Mr. Gandhi, and maybe we can start with your walk across India. I think it was called the Bharat Jodo Yatra, right? Is that the Unite India March? Or is that the correct translation? You walked 4,000 kilometers through 14 states, I think 146 days. You only finished in January. So why didn't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you. Thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey. But it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience, painful at times, but we all learned a lot. And it placed on the table a different narrative of India, right? Not an angry, aggressive, violent narrative, which is currently deployed by the BJP, but a peace-loving, almost Gandhian, non-violent, open, accepting narrative. And I think that was the biggest success of the Yatra, that it clearly placed on the table a different vision of the country.
And what did you learn while you were sort of traversing, the many diverse states of India, mobbed by people at different stages along the way? We learned many, many things. Well, the first thing I learned was that listening, especially listening to people, large numbers of people, is something very powerful. And I realized that as a politician, before my walk, I was not actually listening properly, right? As politicians, we start by telling you what we think. And we have a narrative in our mind, and whenever somebody says something, that narrative is shaping our conversation. Maybe we want to impress a little bit and say we understand, what you're trying to get at. So that instinct went silent. It went silent because, frankly, I had no choice. One, I had a knee problem, so my mind was like trying to calm my knee down. And second, the number of people was so big that it was no point. So after some time, I just went silent and I started to listen properly. And it was a very powerful experience for me. Taught me patience. And there was huge pressure. I mean, to give you an idea, 6 people died in the walk. Many people broke their legs, arms, because there's huge pressure of people. There were thousands, at times 50, 100,000 people walking. So it was a physical experience. The other thing I learned is that no amount of exercise makes you lose weight. It's like completely a myth. I mean, at the end of this thing, 4,000 kilometers, I go on the scale and I put on 1 kilo. I mean, so I'm like, okay, so it's totally diet. It's nothing to do with exercise. That's the other thing I learned. Yeah. And how has the walk been received politically? I mean, obviously, you did it for the reasons you said, but you're also a politician. You're seeking to win public support. There are national elections coming up in India. What's your sense in terms of how it's been received in terms of your own political position and Congress's position in India? It's transformational. It's transformational, certainly for the party, because it gave tremendous energy to our party workers, but it was also transformational for a lot of the people who are coming. And the powerful thing about it was the physical contact and the scale of the physical contact. And it was something, I've been to thousands of meetings, public meetings, conversations like this. It's a completely different thing, because when you're walking, and you're walking with, say, a farmer, or you're walking with a young woman, there's a struggle going on. Particularly if you're walking 25, 30 kilometers a day, there's a struggle going on, and you sort of are jointly going through that thing, right? So it's a completely different conversation that happens. The other thing I did, which I think helped a lot, was right in the beginning, I got the guys I work with and I said, look, what is my responsibility here? What is mine and your responsibility here? We are walking 4,000 kilometers, and that's all fine. But what is it that we will not accept in this walk? And I told them that, look, what I want, and there was a rope there. So I don't know if you saw, did you see the video? You didn't see the video? Yeah, I've seen it. Yeah, so there's a rope there, and there's quite a lot of security around the rope. So I told the guys that, look, whoever comes into this area to talk to us, and there were 125 of us walking, so it wasn't just me. I was in front, but there was 125, and these conversations were going on with everybody. And I said, look, whoever comes in, he doesn't matter who he is, who she is, that person's got to feel at home, right? And the feeling I want us to generate is that when they leave this place, they feel that they've left home.
So in my mind, it was not a political exercise. In my mind, it was a personal exercise where I was welcoming people like into this room and giving them a space to feel comfortable and talk, and also making it a personal talk, not a political talk. And we were successful at doing that because there was a lot of pressure, security people pushing and pulling. And so we created this sort of cocoon there where anybody came in, felt comfortable. And then some magic started to happen. Because the moment they started to see this, that there's this connection in the 21st century where, you know, we're not going through the WhatsApp or we're not going through Facebook and all that. And there's this gentleman who's come here and these people who've come here and they're talking to us. Then the nature of the conversation changed completely. And most shocking conversations started to happen. Like the most personal things suddenly people were discussing with a stranger, really. You know? So it became almost like either a friend or a brother, you know, that was the type of conversation. So a lot of stuff came out. And you've talked a lot previously about the attacks on democracy in India, at a time when I guess there's a sense that globally democracy is under pressure. I mean, do you see any linkages there? Do you think there is some sort of global shift against democracy that's affecting or partly driving what's been happening in India? Or do you see the challenges in India as being pretty endogenous to India's particular political environment? They're linked for sure, but each country has its own history, its own philosophy, its own way of thinking about these things. So definitely there are two sort of visions of the planet emerging. I mean, that to me is clear. There's a sort of free, democratic, open space idea, and then there's a sort of more controlled, coercive idea. And that is visible. There are some nuances to it in India, right? First of all, it's not a battle between political parties anymore. It's a battle between two old ideas of India and philosophical ideas of India, which are diametrically opposed, different. And the BJP represents one and we represent the other. In India also there's the matter of caste, right, which doesn't exist, for example, in England or the United States. It's a very particular aspect of society. So it plays out differently, but it's sort of informed by what's going on in the rest of the world. And I mean, obviously, you know, you're a politician. You've pinned a lot of the blame for what's happening on BJP and Narendra Modi's government. But are there bottom-up drivers, do you think, in India as well? I don't. It's not that I pin the blame on them. It's that I feel they operationalize it, right? So they are the mechanism through which it's happening. But I said in my Cambridge talk that I think the problem, well, when we walked, we heard basically three things. Well, four things. Unemployment, price rise, inequality, and violence against women. Those are the broad themes that came out. But the real problem is the unemployment problem, right? And that's generating a lot of anger and a lot of fear. And I think the unemployment problem is happening because earlier, if you look at the 50s, 60s, 70s, 80s, there was a concept of production in the democratic environment, right? Countries like Britain, countries like India, America, they produce things. And there was manufacturing, there was production going on. And then for whatever reason, that was parceled out to China, right? And today we live in a world where there is a production model in the coercive environment, but there is no production model in the democratic environment. So the result is that it becomes very difficult for democratic countries to
give their youngsters employment. I don't believe that a country like India can employ all its people with services. I just don't believe it. It doesn't work, right? It doesn't have the connectivity, it doesn't have the structure that can deliver you those jobs. So to me the question is, can a democratic production model be rebuilt, and what does it look like, right? And I think that's at the center of what is creating the problem. And the problem is manifesting in different places differently. In India, it's manifesting along caste lines, along religious lines. I think we might come back to that economic question later if we have time on economic models. But obviously, you know, the BJP would say to you that you're looking for excuses for why Congress hasn't been able to cut through. You know, so you blame the kind of the playing field being unfair. And I guess there's certainly a point there that Congress and its coalition partners have struggled to cut through, given what you're saying about the scale of the problems that people are facing. So why do you think that's been, that you've struggled on the national stage to get that cut through? And how do you think you might be able to change that, you know, leading up to the next national elections? Well, to put it in perspective, right? If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not, I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally. You know, that's not the case, right? But there is a set of changes that are taking place in India. And the Congress party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and, you know, the Congress is gone, I mean, that's actually a ridiculous idea. And as far as the coercion, the violence that is concerned, it's not the Congress that's saying it. Congress is saying it, but you just got to travel in India and see it. I mean, you can see what's being done to the Dalit community, or you can see what's being done to the tribal community. You can see what's being done to the minorities. It's not that the Congress is saying it and objectively it's not being seen. There are articles all across in the foreign press all the time that there is a serious problem with Indian democracy, right? It's also the way the BJP responds, right? It's not interested in a conversation. They've decided that they know what's going on. Nobody else in the country understands what's going on. And that's it. And this is visible. I mean, you can ask any opposition party. You can see, for example, how the agencies are used. You can ask any opposition leader about how the agencies are used. My phone had Pegasus on it. That simply was not happening when we were in power. So there are things that are very obvious and are apparent to everybody. And when we go beyond kind of the next election or the election after that and think a bit bigger about India's future, I think you described India really nicely as sort of ongoing negotiation between different states and peoples. And obviously the intercommunal tensions are not a new phenomenon in India, but how does India move beyond that to a kind of a better, more peaceful, smoother kind of negotiation in the next decades? Yeah, so I mean, one way of looking at India is that it's a country, and another way of looking at it is that it is a negotiation between 1.4 billion people, right? And that negotiation, if you imagine India, in terms of numbers, it's probably 3 times Europe, 3 times the United States. It's probably got as many languages as Europe does. It's certainly got as many histories as Europe does.
And that negotiation is a complex negotiation. And that negotiation happens, it doesn't happen out in the streets. It happens through institutions. It happens through the parliament, it happens through assemblies, it happens through the courts, it happens through the election commission, right? And my worry is that the architecture of that negotiation is being attacked and broken, right? And you can see sort of the symptoms, right? The Prime Minister one day turns around and demonetizes the entire currency, right? The Reserve Bank doesn't know about it. And everything has been bypassed on something as fundamental as the currency of the country. Right? That's an example. And it's the same way the GST was worked out. Right? So you can see that the reliance on those institutions is reducing. And that to me is very, very dangerous. Right? So certainly there's repair work that needs to be done. Right? On the idea of freedom, on the idea of independent institutions, there's a whole bunch of repair work that needs to be done. And then I think fundamental to a successful India is the decentralization of power. So what is happening, what you see, the trend you see is massive concentration of wealth and power. Right? And that, if you really look at the BJP and see what's the one big thing that they've done, it's huge concentration of power in the Prime Minister's office, and then huge concentration of wealth in the hands of 2 or 3 people, right? And that, to me, a country the size of India simply cannot be run like that, right? So that, to me, the decentralization, supporting small and medium businesses, starting or reimagining production, manufacturing in a modern way, in a decentralized way, in a technological way. And I think their linkages between the West and India are critical. I want to pivot a bit here to foreign policy and start with India and China. And I know you're a keen follower of China, and obviously in the last few years we've seen these flare-ups at the border seemingly driven by China. There was a trajectory previously where Xi Jinping and Modi seemed to be getting on well. They had their sort of tea meeting in Wuhan. Why do you think in the last few years Beijing has decided to antagonize India? Because it seems to have really pushed India towards the West. Antagonize is sort of a benign word. I mean, they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Right? I mean, I don't know. That antagonize doesn't quite capture it. Right? No? I mean, yeah, it doesn't quite capture it. And the interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken. Right? Now, what message does that send to the Chinese? Right? The Chinese know they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Our military knows it. And our Prime Minister says, well, we're not there. So it encourages them. Right? So that's one aspect of the problem. As a country, our ethos and our DNA is democratic. Right? I mean, there's the book, The Argumentative Indian, by Mr. Amartya Sen. We just like to talk and, spend a lot of time talking and discussing things. And that's the way we build consensus, because it's very complex. And so we in the Congress are pretty clear that whatever is going to be built, whatever is going to happen, has to be in a democratic, in an open structure. And that, of course, that's not China, right? So we are much more comfortable with the democratic idea, that open idea. Of course, at the same time, they're our neighbor, and we are in competition with them. And frankly, if we're going to talk about production, right, we are the biggest game in town. And so they see us as a problem, right? So my approach is, they are offering a
vision of productivity, of prosperity, well, we should have a vision of prosperity too. And that includes the West and India. But that's missing. Right? So to me, that's where the work needs to be done. It seems to me that as someone who's lived a long time in Asia and watched the politics play out, it's going to be very hard to have a successful, productive Asian century if India and China are at loggerheads. So how can you foresee a rapprochement between India and China, and how might that happen? How could that happen? I mean, I don't know about rapprochement, but I do think that we have to have a vision for production, right? And I don't think it's going to look like the Chinese one. It can't. Structurally, we can't do that, right? So it's got to be a decentralized one. And I think you are going to have a level of competition between the two countries. There is going to be, on the margins, there's going to be a little bit of tension, a little bit of hostility, but I think it's very important that the lines are clear. I mean, they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory, right? That's the fact. So what would a Congress government do about that? Well, I mean, we'll have to see when we're there in power, but I think making things clear, and certainly not denying that they're sitting in your territory to start with. And so you spoke earlier about sort of different visions of the world, and I guess a US-led vision you're implying, and maybe a China-led one. But what would an India-led world look like? Is it very similar to the sort of Western democratic ideals? Is it something very different? I don't quite like the word led, right? I think it's a joint effort, right? And I think there are components that the United States has, there are components that Britain has, there are components that India has, and they're valuable, right? So I think I don't like the idea that that's being led by that person, this is being led by that person. I like the idea of a bridge. So how can we imagine a bridge of prosperity between these systems and these ideas, where we have a role to play, we bring a lot to the table, you bring a lot to the table, right? And let's have a conversation about what those things are and how we can put it into practice, right? I think the world is, in the 21st century, is connected enough where the word led is problematic. So is it then that you're envisioning some more sort of more multipolar order where? No, of course, the United States is more powerful, right? So one cannot deny that the United States is powerful, but everybody is required. You can't in the 21st century say we're going to exclude you. That's not a possibility. So now, what would the Indian elements of that bridge look like? A successful, in my view, it would invoke the ideas of Mahatma Gandhi. It would be non-violent. It would be sensitive. It would stand for some of those values, which India is very good at doing. It would respect other cultures. It would not be aggressive. It would try to listen to other perspectives. We're good at doing that. I mean, we have in our philosophical structure, we have these ideas. We have this idea called shunyata, right? Zero, non-existence. So that can absorb everything. So those are the type of ideas that I would say that India brings to the table. And I want to ask about Ukraine, because it's obviously a massive issue in Europe.
I think by and large Congress has supported, if I'm right in this, the Modi government's position of neutrality at the UN when it comes to the war in Ukraine. I mean, how do you think that stands with India's position as a democracy and wanting to provide democratic leadership and upholding, the ideals of freedom and sovereignty? I mean, I would agree with the foreign policy on that issue, and there's also an element of national interest. There are interests. We have to look after our interests. So they're there. But I'm against any type of war. I'm against any type of violence. And the sooner it ends, the better it is. And as far as the 21st century is concerned, a war like Ukraine with the potential for unlimited escalation is just downright dangerous. And we should be very careful that it's playing out in Europe. And everybody should try and do their bit to stop it. And could you see a time when India does start to move away from Russia? Obviously, that's one of the reasons why India is wary of criticizing Russia, because it relies on Russia for a large part of its military equipment and technology. But obviously, at the same time, the West has been courting India in part because of the issues that you have with China, and we see the existential threat from China. So, could you foresee this shift happening over time? I mean, look, self-interest is important, and then you're saying courting. I don't know how well are you courting. Well, it depends. That's up to you. How well you court India. Yeah. So, and could you ever envisage an India that does move away from multi-alignment or non-alignment to kind of hard alliances? I don't know. I don't think about it like that. I think what is it that we're trying to achieve? Right? Start from there. What is our problem? Our problem is we've got a huge population, and we need to give them jobs. We need to give them livelihood. We need to give them an imagination. And that's our primary job. Now, we will do whatever it takes to make that happen. And the best route to make it happen is what we'll be doing. We're not going to do anything that will damage the aspirations of our own people. We're not going to do something that is going to, damage their employment prospects. So, every country looks at itself, looks at the problems it's trying to solve, and then works from there. Right? I'm going to come to audience questions in a minute, just a couple more. I mean, firstly on the economy, I mean, it seems to me that the model of industrialization and manufacturing, export-led growth that was very successful for Japan, Korea, Singapore in driving them to rich country status doesn't really work anymore because of changes in the rise of automation, potentially because of the fracturing of global value chains and some sort of shaving away of the benefits of globalization. So for India as well, which is such a big country, such a big domestic market and big challenges to employ its young people as well, what is the model do you see going forward for India to achieve the sort of rapid growth but also more equitable growth that your country needs? In my walk, I walked past a town called Bellary in Karnataka, and I literally walked past it. And some people over there said, "Look, this is a jeans producing center. Okay, and please come and see what we're doing." So I spent half a day walking around Bellary and looking at this jeans production that they were doing. It used to employ 5 lakh people. So 5 lakh is 500,000, right? Today it employs 40,000 people, right? It's essentially a network of skill, right? Whenever you walk in there are people who have huge amount of skill sitting there, and they're doing nothing, right? And then make that accessible to people, right? And those centers exist all across India. There's Bellary, Moradabad, everywhere. Almost every district in India has a skill base that is profound, right? But then what do?
or what is happening today, huge concentration of wealth, huge concentration, complete control of the banking system by 3 or 4 large industrialists, and the skills just lying there wasting away. Those 4.5 lakh people today are unemployed, right? That Bellary itself, if it's aligned properly, if the banking system is made accessible to them, if you inject technology into that skill space, that thing, you'll be able to produce 1 million jobs there, right? So I don't agree that manufacturing per se is dead, right? I look at it by saying, okay, here is the skill. What do we need now to make sure that this skill translates into jobs, right? And then there are different areas. I'm not saying that there is no space for large business. Absolutely there is space for large business. But the level of monopolization that is taking place today is seriously problematic. It's problematic if you want to transform, if you want to give Indian people jobs. It's problematic if you want to have a productive vision for the country, right? So also, there's a huge scope for agriculture, right? Building a cold chain, modernizing the agricultural system. It's huge potential. It's wasted right now. So those are the type of things that one would look at. Last question I have before I go to questions from the floor and online. You talked a lot on this trip and probably before as well about listening, and I agree with you, listening is an underrated quality in politics and diplomacy where most people prefer talking. So given we've got you here and we're all keen to listen, and you've been in the UK I think for a week or so now, what do you think we in the UK get most wrong about India? What don't we see that we should know to better understand India? Now, I'm going to give away the secret. No, it's like the quote I saw in your room, right? The Gorbachev quote. The Gorbachev quote was to the effect of, we are at a very important time in history, and there are 2 options. One option is this one, and the other option is this one. That's just not how the Indian mind sees the world, right? The Indian mind just does not see the world in a binary way. So for the Indian person, number one, we are not at a critical point in history, right? And number 2, there's thousands of options standing right in front of us, right? That's just how the Indian mind works. And it translates, if you just go to Delhi and you look at the street and you look at the lanes, you'll see Indian drivers making their way through this thing, right? They'll go this way, they'll go that way. Now, that looks like chaos, right? But in the 21st century, that chaos is very powerful. But that chaos has to be managed effectively. Thanks. That's a very good answer. Okay, I'll tell you something else. Yeah. If you can, this is a concept that's difficult. And I'll try it. Broadly, there are 2 philosophies in India. One believes in infinity, right? That says you will live forever, right? And the other that says you don't exist. Concept of shunyata or anatta in Buddhism, right? And India operates between these 2, right? The idea of non-existence, or anatta as in Buddhism, is the essence of listening. So, if I'm sitting here talking to you,
and I don't exist, right? That is absolutely the perfect way to listen to you. What do I mean by I don't exist? It means my aspirations don't exist. It means my fears don't exist. It means, I am sitting almost in silence, almost as if I'm dead and I'm listening to you. That's something Indian people can do. It's a very powerful thing, right? And if you look at our, so to speak, the grandmasters, people like Gandhi, that's actually what they're doing, right? And it's a philosophical thing, but it's the power of the Indian civilization. It's where, the West got zero from. Yeah. Right? And then that, no, you're laughing, but then when that zero arrives in the West, it completely transforms and does something that it can't do in India. Right? Because when it comes into contact with your philosophy, the sum of both those things is much bigger than either of them. So to me, that's how I see it. I used to sit on a table when I was small, and my grandmother and my mother's father used to sit there at lunchtime, and they used to speak to each other, and I would just look at them, and they were two different worlds, right? My grandmother would be speaking something else, saying something, meaning something else, and my grandfather would be understanding something else, but the conversation was going on. And that to me is the essence of the thing, which is that I look at you and I say, he has ideas that are actually powerful and useful for me. And in turn, I have ideas that might be powerful and useful for him. And I think that's what's important in the 21st century. Yeah, I totally agree. Listening is great. As a final thing, I am a practitioner, and I'm sort of I deal in power, right? And I can tell you that, and this is something, it's a bit hard to grasp, listening is much more powerful than speaking. There's no comparison between the two. But for some reason, people are convinced that speaking is more powerful. Right? Even if you're speaking to me and I'm listening to you, I understand what you're going to do. Right? I can predict what you're going to do if I listen carefully. So many questions. The gentleman at the front, if you can tell us who you are and any affiliation, and the mic's coming to you, and please keep it to a question, not a statement. Thank you. Thank you very much. Hanif Adil, former advisor, British Parliament, British Government. The question, I'm going to come to the question. I just want to make one point. No point, sorry, just a question. Okay. Other people have contextual, questions. Okay. Rahulji, thank you very much for your very sobering analysis. Clearly, the comparison between the RSS and the Muslim Brotherhood is an interesting one. The fact is, the BJP have captured the narrative and the institutions in a way that most people would have thought that they could not have. So clearly, listening, all the things you're doing are great. But in terms of a clinical approach, what would be your short to medium term plan in terms of projecting what you stand for, what your party stands for, what you want to achieve with the grassroots? And because you're taking on somebody who is a populist, who clearly has support, who's captured the whole state effectively. That's my question. Thank you. I think the walk that we did in the last 4.5 months is a powerful model, and I think it brings in a lot of the ingredients of a response to what you're talking about, and I think it works for most of the opposition in India. It's acceptable to most of the opposition in India. So reaching out to the people in interesting ways,
and making sure that you're having a direct connect with people, and building a new imagination, I think is central to fighting the BJP. Also, don't underestimate the resistance. Authoritarian people like to demonstrate how powerful they are and how strong they are. The resistance in India is also very strong and very powerful, and can do wonders. And the lady in the cream jumper just behind. But you know what? If we step back from the BJP Congress conversation, what's actually happening is a huge transition in India, right? Huge migration of people. And India is now searching for a new model with which to engage with its people and the rest of the world, right? And what's pretty clear is that the BJP model is not it, because it's creating much too much turbulence, much too much resistance. So the real challenge that people like me and other leaders in the opposition have is, what does that thing look like? Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. I'm going to ask an online question, quite a pointed one, from Saeed Badrul Ahsan, who says, would Mr. Gandhi agree that dynastic politics has by and large impeded the growth of democracy in South Asia, in India, Pakistan and Bangladesh? I mean, I think impeded the growth of politics. Of democracy in South Asia. No, I think the structures that are playing out and are impeding democracy are much more structural and way beyond dynastic politics. I mean. Okay, gentleman at the front here. Thank you. Hi, Rahul. I had a question around China. Tell us who you are, sorry. Sorry, my name is Bharat. I'm from Rio Tinto. And Bharat. Bharat, yes. The question I had was around China. I think you're on record saying that this government doesn't quite understand the nature of the risk that China poses. And I'm just curious to understand what, in your estimation, is exactly the nature of that risk. And fundamentally, what are these guys not getting? Thank you. If you look at
what has happened in Ukraine, right? The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. And if you do not change this relationship, we will change your territory. We will challenge your territorial integrity, right? In my view, that is what is happening on the borders of my country. What China is threatening, China does not want us to have a relationship with the United States. And it is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. So in my view, the basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. I mentioned this to the foreign minister. He completely disagrees with me, and he thinks this is a ludicrous idea. It's fine. We have a difference of opinion. Yeah, the lady in the third row in brown jumper. Hello, thank you very much. Yes, no, it's me. Thank you very much. My name is Malini Mehra, and I run an international parliamentary organization that works on climate change. But my question is raised to you as a citizen of India. There are many of us in the international diaspora. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. You spoke about the need for India to address these issues by itself, not within its own borders, because you have the international diaspora. And many people like myself no longer... Sorry, I didn't. Which issues? The environmental issues? No, the issues facing India, the democratic despair that the country is in. So here is my question, and I ask it as someone who is one of possibly millions who no longer recognizes the country that they were born and raised in. And we would like to know what your message is. Is that a bad thing or a good thing? What do you think? No, I'm asking you. Why am I here? I don't know. I'm here because I am feeling wretched about the state of my country. Yeah. Absolutely wretched. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. So for those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? 20 years ago, I worked with Professor Amartya Sen. And Amartya didn't let go of his passport. I'm not getting rid of my passport, and I want to know what can we do to reanimate our democratic institutions. Well, I like your energy. It's very important. It's very important. And it goes to the point of the resistance. You see, the resistance is sitting here. I meant that the battle for the democratic institutions of India is frankly India's responsibility and no one else's, right? And it's something that we are doing. But you, of course, are Indian. So it's your responsibility as well. And you're part of that discussion. I think when you express yourself, I think what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he's fighting the RSS, he's fighting the BJP, he might be biased, right? But for you to say it, it has a totally different impact. So you're by expressing yourself and by making your position clear, you're already helping in a big way, right? I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. So thank you. I'm going to go to a question right at the back. The gentleman in the corner in the glasses, just behind the door.
Thank you. Now I'm going to come to this side next. Hi, my name is Shoaib. I'm just a keen follower of the Indian politics. First of all, Rahul, thank you very much for giving someone else the opportunity to become the president in your party. And the second question is, do you think to implement your philosophy and your vision of the Indian politics, probably you need to win the elections. And to win that elections, you need to defeat BJP. But do you think with Mr. Kharge as a party president, you are well equipped to defeat BJP in the next elections? Look, Mr. Kharge was elected as president in a election that took place in the Congress party, and he is the president of the Congress party. We are all working together to fight the BJP, and I'm extremely confident in Mr. Kharge's capabilities and his expertise. I don't know if you know his history. Do you know his history? I mean, he was a Congress worker. He's been a Congress worker for many years, and he's come up the ranks, and he's an extremely capable, dynamic person. So I'm very confident in his leadership. I'm going to come over here. Maybe the gentleman at the front in the hoodie. Hi, I'm Sriram. I'm a Chatham House member. I just wanted to ask you, is there any type of new policy like how Jawaharlal Nehru ji introduced the non-alignment movement policy? Is there any changes that you want to introduce in the Indian foreign policy? As I said, the principle of foreign policy is unfortunately self-interest, right? And any Indian government would pay attention to that. So in answering that question, the first step is what is important to us as a country, right? What are we trying to do? And what we're trying to do is, we were a rural country and we are making a transition into an urban country. And this transition has a huge amount of energy, right? Potential for violence, but also potential for prosperity, potential for transformation. And we're trying to manage this energy as it's moving, right? If you look at our policies, or the UPA policies, they were all about trying to manage this transition from a rural to an urban connected country, right? So our foreign policy will follow that idea, right? Our foreign policy will reflect that, right? What would we like to do? We would like to build a society that's productive, a society that allows our people to have an imagination, to live happily, to be educated, to have a certain amount of health care. Those are things that's what our imagination is, and our foreign policy will align with that. I've got a question online about climate change from Arita Segal, who says, what is your vision on decarbonizing India when China controls so much of the supply chain, I guess, for renewable energy? See, I mean, on the climate change issue, interesting thing I noticed in the walk was that pretty much everywhere we went, they were speaking about climate change, but they were speaking about it locally. So they were saying, look, it's terribly polluted, the water is very bad, it's got fluoride in it, but they were not making the connection between their local problem and the global problem, right? So I was thinking that it's important in India that we start to push that idea that this local problem is connected to the global problem. So that's one aspect of the yatra that came out. On, what is the vision for carbon? These things are not things that one person visualizes and suddenly says, this is my vision for carbon. I mean, that would be insanity, right? The way to do it is, you have a conversation with people, you have a conversation with stakeholders, and you say, okay, so what is the best way forward? And that's an evolving conversation. A lot of people they think that
leadership is about, sitting there and just coming up with these ideas, and it doesn't work like that. It's about talking to people, understanding, what the best, most optimal outcome is, and then heading slowly in that direction. Yeah. Gentleman here in glasses, at the third row, in the middle block. Thank you. My name is Zaid Harun, and I'm just a member here. But I wanted to ask you I know there were a lot of conversations about the narrative being taken over by BJP and RSS views, and you spoke about the challenges China brings about. But I wanted to ask you, would your views or Congress views differ from BJP's on Pakistan, and if there's any difference? I mean, my personal view is that it's important that we have good relations with everybody around us, right? But that also depends on the actions of the Pakistanis. Now, if the Pakistanis are promoting terrorism in India, that becomes very difficult to do, right? And that does happen. We've got time for one more question. I think the lady here in the fourth row in this block here. Last question. Hi, my name is Varsha Varghese. I recently graduated from SOAS University of London, and I come from Kerala. So my question is, during the Bharat Jodo Yatra, you mentioned you listen to many people. And as much as I value the importance of listening, when people come to you, they look as someone who has a possibility of changing their lives or improving their lives. So as someone who has a possibility of becoming the future Prime Minister of India, what do you think? What actionable plans would you undertake? I mean, that's a very wide canvas you've given me. I mean, in what space? This is something I could possibly improve, or this is something that I should do if there is an incident that has touched you or anything. In the yatra? Yeah. In the walk, a lot of women came up to me, and quite a few of the women spoke about violence that had been done to them. And in one of the cases, actually in many of the cases, but in one particular case, I won't go into the details, but in one of the cases, I asked the girl, listen, she had been attacked, she had been molested, raped, and I asked her, listen, should we call the police? And she said, no, don't call the police. I don't want you to call the police. And I said, why don't you want me to call the police? You've come here, you've told me this, and now you don't want me to call the police. And she says, yeah, I don't want you to call the police because then I will be shamed, right? So to me, that was a very striking thing, that here's this young girl who suffered this violence against her, and now she cannot act on that violence because she's scared that she'll be shamed. So I was thinking to myself, this poor girl is now going to live the rest of her life never telling anybody this, and it's going to multiply the pain of what happened to her. So that is something I think I would like to change, that the violence, the level of violence against women reduces, and particularly this idea that of shame, which is completely a ridiculous idea, is changed. Thank you everyone for joining us today. Thank you, Mr. Gandhi, for your time and taking all the questions. I'll certainly do my best in future to not exist in the right kind of way and listen better. But yeah, please join me again in giving another round of applause to Rahul Gandhi. Thank you so much.